And now, for the most anticipated highlight of the day, a freewheeling chat session with our guests of honor, the legendary team that beat the world to win the Cricket World Cup. Ladies and gentlemen, please welcome on stage the heroes of 1983. Also on stage will be the charismatic Gaurav Kapoor to take us through their amazing story of grit, persistence, and resilience. Check. Ladies and gentlemen, please a big round of applause for the 1983 champion team. And of course, we are here on a very special occasion because tomorrow, the 25th of June, is the 40th anniversary of this team lifting the World Cup. The 40th birthday. Anniversary sounds grown up. Birthday sounds youthful. we'll do 40th birthday. So here they are. This, of course, is a fantastic moment. It's a fantastic moment to be sitting here with them. I'm sure it's a very fantastic moment for all of you to be sitting here with me. I'm sure that you're, of course, it goes without saying. But first, I just want to tell you that I've got a water bottle for all of you, but I've only got 4 mics, right? Yeah, 4 mics. So teamwork has to be done. We have to share, right? We would like Sunny Bhai, as the elder of the group, if you could just tell everybody, sorry, as the youngest member of the group, if you could just tell everybody not to fight amongst themselves for the mic. And also, I want to say that there was one time about 4 or 5 years ago when on the launch of 83, we had started a conversation like this. And Ranveer and me thought that we'll start with the batting order. And so we started with Mr. Shrikant first. And today, all the other team members have said that we have to reverse the batting order and he'll be speaking last. Sir, captain said, sir. Captain said, sir. Huh? Oh, he has spoken first. He has spoken first. That's why I sat you right next to me. You're sitting right next to me. It's good we've got it out of the way right in the beginning. But I want to start with you, Paji. Let's start with you. Can you believe that it's the 40th birthday of that momentous day? First of all, good afternoon. Namaskar aap sabko. And Gautam bhai, thank you very much. You invited us. Collectively, we are celebrating with you and our team. बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. हम हर साल कोशिश करते हैं, जैसे आप ये साल अपना जन्मदिन मनाते हैं, हम कल के दिन इकट्ठा टीम होकर जन्मदिन मनाते हैं. तो आपने हमें मौका दिया कि आपकी महफिल में आके हम थोड़ा सा समय बिताएं, तो बहुत ही अच्छा लगा है. और अब आप पे आ जाता हूँ. बड़ा अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा था कल ही हुआ है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें आप भूलना चाहते हो, लोग भूलने नहीं देते, तो इसलिए अच्छा लगता है. अपना जन्मदिन तो कोई नहीं भूलता, लेकिन दूसरे आपका जन्मदिन याद रखे जो हमारा कल है, तो और भी अच्छा लगता है. गौतम भाई को ये कहना चाहता हूँ कि अभी सुन रहा था, देख और ऐसा महसूस किया कि
आपके 44,000 लोग आपके लिए काम करते हैं। मैं आपकी कामयाबी नहीं कहूँगा और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरी कामयाबी है 83 टीम में। आपकी अकेले नहीं है, आपकी पूरी टीम की कामयाबी है जो यहाँ पर आपको लेके आई है। यहाँ तक आप जब पहुँचे हैं तो आप अकेले नहीं हो सकते। बहुत लोगों ने स्वेट एंड मेहनत के साथ आपको यहाँ तक पहुँचाया और सेम हम अकेले नहीं वर्ल्ड कप जीते, सबकी उतनी ही ताकत थी या कह सकते हैं जोश था जितना मेरा था। तो सिर्फ मेरा ही नहीं या मेरी टीम का नहीं, तमाम हिंदुस्तान के लोग जो हमें चाहते थे उस दिन जीतना, तो उनको भी धन्यवाद कहना चाहता हूं। Sunny bhai, let me ask you your memories of that day, just that day, the 25th of June, 1983. Yeah. Taking a long run up. And what did you eat for breakfast? So we wished him luck, and then he came and he said, "We are batting first." Batted, went, batted for an over or so, didn't get a single run. Next over again from Mr. Ghana, who had been my flatmate when I played for Somerset. He and we had shared a flat. So every ball has gone past my nose. I've not been able to, touch bat on ball. And then finally, I'm still on zero, and the ball hits my pads and goes down to deep fine leg for a leg by. And as I went to the non-strikers end,
I'm standing there and see Garner's 6 feet 8 inches tall. He's walking past me, and because I'd shared a flat with him, and his nickname was Bird. So I said to him, "Hey, Bird, how about one off the mark for your old flatmate?" Because I was on zero. I said, "How about one off the mark?" And he looked down at me. I'm 6 feet 8 inches. Looks down at me and says, "No, man, no freebies for you. This is the World Cup final." So that's what happened. I didn't get any freebies. I got out for two, came, sat in my so-called lucky chair where I scored only 2 runs, and then walked in and out of this thing because I've not been a good watcher of the game. Watched Jimmy play very good innings. Saw Srikanth, play a fabulous square drive and play the hook shot for a six. Then saw everything that was happening, and then that was it. That was then Kapil came, and then Kapil took over. That was my day. And then you want me to tell you what happened in the evening? After winning the World Cup, yes. After winning, no. Yes, please. That I will Later? later. Okay, fine. कान में, ठीक है. कान में. Chalo, little whispers after that. Chika, I'm gonna. No. You promise. You show. No, one. Please, sir. No, you don't feel bad now. Okay, fine. He's only saying. I'm not saying. He's saying. But we'll ask Jimmy Pa. Jimmy Pa, I remember one thing. आपने जब last wicket लिया in the final, all the players come and try to take a stump as a souvenir. आप भी आए लेने के लिए मिस हो गया वो. You never got that stump, or did someone give it to you later? नहीं हुआ असल में ये कि जैसे ही वो डिसीजन हुआ तो पहले मैंने ये लगा यार हम जीत गए हैं और हमने वेस्ट इंडीज को उखाड़ दिया पहले दिमाग में. तो जब मैं विकेट उखाड़ने जा रहा था तो मैं इतना तेज भाग के जा रहा था पवेलियन की तरफ कि वो इतनी ज्यादा गड़ी हुई थी वो निकली नहीं. अच्छा क्रिकेट बॉल भी वहीं पड़ा हुआ था, इसने मुझे दिया नहीं. वो भी बॉल भी वहीं था, बेल्स भी थी, मैं तीनों भी विकेट उखाड़ सकता था अगर चाहता. पर मुझे खुशी ये थी कि हम हिंदुस्तान जो है हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए. मैंने कहा फॉरगेट अबाउट विकेट, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग. इससे बड़ा हमें कोई उपाधि नहीं मिल सकती जो हम टीम ने वहां कमाल कर दिया. तो कहते ना कि खुदा की मोहब्बत को फना कौन कर सकता है, अगर हर एक बंदा नेक है तो गुनाह कौन कर सकता है. सलामत रखना मेरे दोस्तों को, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन कर सकता है. Love it. Jimmy Pa, Chika Bhai wants you to explain it to him. So I think Madan will do a better job. Roger Bhai also wants you to explain it to him. I'm going to ask Sandy Bhai actually about the semi-final. We remember the semi-final. I'm trying not to ask about, performances and scores and wickets, etc. Just moments that all of us fans remember that became really special. I think that one moment in that semi-final was when all the England players were already sitting inside the car only, the last ball. वो चले गए थे सारे. Everybody was on one side, and the last ball, because there had been a crowd invasion, right? If you remember. That moment again was such a special moment because it was almost like वो हथियार रख दिए थे उन्होंने. I think thanks to Yash and Jimmy, late Yash and Jimmy, the partnership which they had, we were tensed, of course, because the run rate was going up. But I'll tell you, not many people know that 22 June, which was the semi-final, happened to be my late mother's birthday also. And she had, on the eve of the match, told me कि life में अभी तक मैंने कुछ मांगा नहीं है, तो please कुछ कर देना. तो मैंने खुद को मैंने कहा था कि आज बॉब विलिस आया, बॉब विलिस का बाप है, मैं तोड़ने वाला हूँ. And luckily, great Bob Willis didn't bowl well, और maybe मेरा नसीब था, मेरे मदर की दुआ थी. And thanks to the partnership between Yash and Jimmy, which I mentioned, I think that helped. And जब सामने कप्तान आता है बल्लेबाज के लिए, मेरे साथ कपिल था, तो सारी चीजें आसान हो जाती है. And it was a funny moment because ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि in a World Cup match, all 9 fielders on the one side. तो मेरा ध्यान बॉब विलिस के पास नहीं था, जो बॉल कर रहा था. मेरा ध्यान ड्रेसिंग रूम में था.
कि मैं भागू कैसे, बिकॉज आई वॉज द स्लोएस्ट ऑफ द टीम. तो मुझे वही डर था कि ये तो चले जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा और ये मुझे पिटने वाले हैं जो गोरे ज्यादा थे वो. Anyway, but it was wonderful experience to be part of that great team. Very happy, and Gautam bhai, many happy returns of the day. Thank you, Sandy bhai. Kirti bhai, I want to come to you. If you could just pass the mic, please, to Kirti bhai. I know we were talking earlier, and we, of course, the whole team is here. Ravi bhai is not here because he's in the UK. He couldn't attend. And of course, we're all missing Yashpal bhai today. And you, yeah. So, and you, of course, had a lot of interaction with him as well. But tell me about the World Cup, about the campaign, your special moment or your enduring memory that you have from that. Tell me from the point of view of the team, of the camaraderie, of the brotherhood. I think last time when we met for a Hindu function, there was a beautiful statement or something that was made very emotionally and from the heart by Sunny Bhai. And he had said that it's no more a team, it's more of a family now. And that is something that we've become. हम लोग हर वर्ष मिलते हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित होता है और उस कार्यक्रम में हम लोग सब कोई मिलते हैं और जो पुरानी यादें वही के वही प्रश्न होते हैं, वही के वही जवाब देने पड़ते हैं. तो अब आप मुझसे पूछें कि क्या नई बात करूं, तो अब एक नई बात कर देता हूं. पहले तो ये कहा था कि जब मेरा पता लगा कि मेरा नाम भारतीय टीम में आ गया, हमें किसी ने कोई मौका ही नहीं दिया जीतेंगे. हमने कहा 1 महीने का फ्री पेड हॉलीडे मिल गया. उसके बाद सेमीफाइनल में मुझे बॉलिंग का अवसर मिला और इयन बोथम उस जमाने के बड़े जबरदस्त हरफन मौला खिलाड़ी थे, तो उनकी विकेट लेने का मुझे अवसर मिला और बॉल बड़ी लो रही और स्टंप पर गिरी. तो कपिल ने आगे पूछा कि लो रह गई और टर्न भी हो गई, दोनों में से एक ही बात हो सकता है. तो मैंने कपिल से कहा तो ये गनीमत समझ कि 1 इंच ऊपर स्टंप के लगी है, कहीं और नीचे जाती तो अंडरग्राउंड हो जाती और बोतम बच जाता. तो हमारा स्मृतियां तो बहुत हैं, क्या कही जा सकती हैं. जहां अभी बहुत ही अच्छा गा रहे थे, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हूं 14, सब जितने भी नाम ले लो सब एक ही हैं. तो एनीवेज वो स्मृतियां बहुत अच्छी हैं. और एक बार पुनः गौतम भाई को आपके जन्मदिन की हार्दिक बधाई. आपका जन्मदिन और उसके बाद हमारा जन्मदिन आता है, तो ऐसे ही हर एक साल करते रहिए, बुलाते रहिए. आपके जन्मदिन के बाद अपना जन्मदिन मनाते रहेंगे. अच्छा ऐसा दो केक कटेंगे, अच्छा है ना, तो फुल वीकेंड ऑफ सेलिब्रेशन. I'm going to go to Mr. Roger Binney. If we can just pass a mic to him. There you go. You have it. I'm not going to ask you a question in Hindi. I'm going to ask you ask a question in Hindi. Chika bhai is saying I have to ask you a question in Hindi. Punjabi? Sir, Punjabi में तो आप ही पूछ लीजिए sir. Tamil. We have representatives of everywhere. This is truly a pan-India story, right? In Hindi, I'll ask him. BCA president, we have to ask in Hindi. Chika bhai is saying I have to ask in Hindi. Sir, बताइए कि जो सारी यादें आज ताजा हो रही हैं आज इस दिवस पे, तो आपके जहन से कौन सी यादें वो हैं जो, is that correct? Chika bhai hasn't understood the question, but he's saying it is correct. We'll make Srikant answer it first, then I'll answer it after that. Okay? It's complete. The question is complete. Okay, I'll ask you the question now in English, which is that of all the memories that come flooding here, you see all these pictures, you meet all your friends, and I know all of you meet so often, you meet all your brothers. What is that time that comes into your mind when all of you remember that you personally started believing? Well, I think the first time or the first day really we started to believe in ourselves, and there was a dramatic change in the team atmosphere, the team thinking. Was the day we beat the West Indies in the first match. That's one day that started everything. If you go back before the World Cup, we played 3 practice games, or was it 4, Balu? 3, and we lost all 3.
We lost to the League 11, which is a team made up of all the league players in London. We lost to them. We lost to New Zealand, and we lost to Sri Lanka in the practice warm-up games. So we were really, we didn't look like a team that would was thinking of doing well. But that day, the first day when we played the first match, we played the West Indies. Suddenly, something clicked in the field. There was a total transformation of the team, and that's really what I contribute to us winning the World Cup. And Baluba, tell me, when did you, in the final, I mean, you took that fantastic wicket, that delivery we all remember to Gordon Greenwich, but as a team, when did you all think ke, yaar, ye to aa raha hai, trophy aa raha hai, aa raha hai trophy? ट्रॉफी आ रही है, मुझे लगता गई नहीं थी। पहली मैच जीत गए थे तो सेट हो गया था हमारी टीम, और उसके बाद में कपिल ने 175 जो किए, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि ट्रॉफी कहीं जा सकती थी। हमारे हौसले बुलंद हो गए थे, इतना मैं कह सकता हूँ। वो एक मैच और एक इनिंग ने मुझे लगता है हमारी पूरी टीम का एटीट्यूड चेंज कर दिया, हौसले बुलंद कर दिए। कहीं लगा कि वाहिगुरु, रब, ऊपर जो भी है, ऊपर वाला हमारे साथ में है, और कपिल जैसा कैप्टन फ्रंट ऑफ द आगे से लीड कर रहा है, और तो बस हम जाओ और अपना परफॉर्म करो। क्या सैंडी भाई कुछ बाउंसर मारे आपको? नहीं, वो भी कंपलसरी कुछ पूछ रहा है, बोल रहा है मुझे कि ये बोल तो यो बोल। नहीं, मुझे एक ही लगता है कि ना 83 टीम जो थी, एक ना सीधी सड़कें किसी को याद नहीं रहती, मोड़ याद रहते हैं। तो 83 टीम विक्ट्री जो थी वो एक बहुत बड़ा मोड़ था क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में, जहां हमारी चेंज हो गई, पूरी एटीट्यूड चेंज हो गई, और क्रिकेटर्स की एटीट्यूड चेंज हो गई। और उसका नतीजा यह है कि आज भी हम जब अंदर आ रहे थे तो इतना क्राउड इस तरह से चेयर कर रहा था वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा कि हम कल ही वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, आज इधर लैंड किए हैं। हैप्पी बर्थडे अडानी जी, आपकी वजह से ना हमें ये फिर से जीने का मौका मिला कि कल ही वर्ल्ड कप जीता है। Actually, Acha, you've spoken about the 175 because it reminds me of something Sunny Bhai had said to me. Sunny Bhai, if you remember when we had a conversation, you had said that 175 changed the game. And then I asked you, I said, yeah, it changed that game. And then you replied and you said, no, it changed the game of cricket. And you said that was the impact of that knock. Would you like to just elaborate on that thought a little bit? Yes, because coming into bat in that situation, we were 5 down for 17. Most of the batters were back in the pavilion, and with due respect, I mean, he was still around, and he's got a test century. He's got a couple of test centuries. So, but the main batters were back in the pavilion, and to be able to play in those conditions, it was overcast conditions. The ball was swinging. The pitch had a lot of life in it. Was something which I haven't forgotten. It's the greatest greatest one-day innings that I've seen, and I've seen some unbelievable innings from later generation as well, from the Tendulkars, the Dhonis, the Kohlis. I've seen some from Sehwag. I've seen some, but that happens to be the best one-day innings, and not just by an Indian, from Viv Richards and all these, and it changed the game because at that particular it changed the game in India. It just brought a whole new perspective to what one-day cricket is, because at that stage, how many people had scored? You score 100 was considered terrific. Here, the man had scored 175, 75 more runs. So that's the reason why. And Kiri bhai, you had the best seat in the house to that innings. You had a very good seat in the house when that 175 was happening. You were there. You saw it happening. Yes, I think I was the most fortunate one who saw the 175 magnificent innings from 22 yards. The rest of them saw it from behind the boundary line. So I was very fortunate and I was very lucky to have seen that. I've never seen such a devastating knock from any batsman till date. In a situation like that,
in circumstances like that to score 175. And you're sincerely the other end watching him score 6-4, 6-4. What an innings. It cannot be erased from the history of international cricket. And that match was the best match of the entire World Cups in the future also. Yes, for sure. 17 for 5, 128 for 8. And then after that, it's history. Right. And here I must add a little bit here. Excuse me, can I, Captain? Right. Now, the scene which Ranveer Singh did coming out of the shower is my scene actually. It is my scene. Now I normally don't get batting. So I was totally relaxed. I was in the dressing room with the toast in my mouth, preparing for a good breakfast. You're not aware of all this. Okay. I've told this to Kabir Khan and the entire team and all those actors. I have told this story to them, but it was changed. Obviously, the hero has to get the limelight. So, right. So this is actually what exactly happened. I am in the dressing room, toast in my mouth, in between my teeth, and the towel around me. All right. And somebody shouted from outside, "Hey, Kiri, pad up." Normally, guys pull your leg. Right. So I ignored that shout. This in a span of 3 minutes again, "अरे क्या कर रहा है यार, pad up यार." बोल के पुकारा कोई, अरे there's something wrong. तो मैंने टवल पकड़ा, टोस्ट दांतों के बीच में, looking for the window to see the scoreboard. Saw the scoreboard 17. My eyeballs came out of the socket. 17. नीचे देखा 5. बोलते ही टोस्ट भी गिरा, टवल भी गिर गया नीचे. Looked around left and right. Believe me, no one was in the dressing room. Right. किरी उस समय सिगरेट पीना छोड़ दिया था. I did not know whether I had a good breakfast. Oh, I thought उस समय आपके हाथ में सिगरेट था. नहीं, सिगरेट नहीं था. सिगरेट नहीं था. Oh, I thought उस समय सिगरेट पीते थे. This is exactly what I told Kabir Khan in front of all those guys. And the whole scene, obviously, you see, it cannot be given to Sahil Khatar. बट किरी भाई, आपकी जो आंखें थी मेरे ख्याल से दूरदर्शी थी, क्योंकि ड्रेसिंग रूम तो बेसमेंट में था. क्या बात है, क्या बात है. That's called team spirit. आज भी याद है सबको क्या होता है क्या नहीं है. I think this is a wonderful. I think lot of storyteller are the best people in this world. क्योंकि जो स्टोरी बताने वाले होते हैं ना बड़े खूबसूरत होते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं, मजा आता है. तो इसलिए मुझे तो कुछ याद नहीं, सच में कह रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं. अगर इतना याद होता तो मैं डॉक्टर इंजीनियर होता. इसलिए खेलना शुरू किया. कौन पढ़ेगा यार, कौन याद करेगा. तो इसलिए हमारे ये जो हैं टीम वाले, some of them are really a good storyteller, and that's the best part about this team. किरी भाई ने बहुत थोड़ी अच्छा देर और शुरू रहे ना तो ये रात हो जाएगी, स्टोरीज खत्म नहीं होंगी. किरी भाई ने बहुत अच्छा तंदूरी चिकन बनाया है, उसको अच्छे से मसाला लगाया है. चिकन किसी और का था, मसाला लगा गया, अपना बना लिया. किसी और का था, तंदूर किसी और का था. नाइस कुक. मदीपा, आई वांट टू आस्क यू, मतलब लोग तो यहाँ पे हर स्टेट से हैं, हर प्रांत से हैं, पर ये थोड़ा पंजाबी टाइप का माहौल काफी रहता है खींचतानी का टीम में ना. नहीं, पंजाबी का जो माहौल होता है अच्छा होता है, क्योंकि एक तो प्यार करते हैं पंजाबी, तो आपको पता ही है सबको. और जितने भी हमारे टीम हैं जो हमें भी बहुत प्यार करते हैं और अच्छा भी लगता है, और इनके साथ खेलकर मज़ा भी बहुत आया, क्योंकि पंजाबी थोड़ा सा जोश दिला देते हैं, हल्ला शरी दिलाते हैं. कोई गल नहीं, मारो मारो देखी जाएगी. तो वो चक्कर रहता है. ये हल्ला शरी देने में तो हम नंबर 1 पे हैं, चाहे हम कुछ करें ना करें, हल्ला शरी जरूर दे देंगे.
पर मेरे को खुशी है कि मैं इस टीम का एक इस टीम का मेंबर हूँ और थोड़ी सी मेरी भी कंट्रीब्यूशन है इसमें वर्ल्ड कप में, पर ये सारी टीम की कंट्रीब्यूशन है जिससे हमने ये मैच जीता। और सबसे बड़ी खुशी क्या है ज़िंदगी की, ये लोग जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें पहचान लेते हैं, जो हमें कभी भी किधर जाते हैं प्यार करते हैं, वही मेरे को सबसे बड़ी खुशी देता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने क्या के विकेट्स निकाले, किसी ने क्या रन बनाए, वो डिफरेंट बात सी हो जाती है। वो पर ये जो लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें रिकॉग्नाइज करते हैं, इससे बढ़िया खुशी मेरे को कभी नहीं मिली। और ना ही मैं रेलवे में भी जाता हूँ, हर चीज जगह में, बस में भी निकल जाता हूँ, कई बार ट्रेनों में भी जाता हूँ, बट पीपल रिकॉग्नाइज मी, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी डन ए गुड जॉब। एंड गौतम जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो बर्थडे की, ऑन बिहाफ ऑफ 83 टीम। आई विश यू गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड आप कैरी ऑन। थैंक यू मदीबा। कोई सवाल तो नहीं पूछना सी और कोई? अरे है, मेरे पास बहुत सवाल है। दिलीप पाजी के पास अकेले हुए हैं मेरे पास। सर, हमने फिल्म में जब देखा था कि दिलीप भाई जब वो बॉल लगी थी वहां पे, फिल्म में तो जब बहुत जोर से लगी, वो असली में भी ऐसे ही जोर से लगी थी। अरे क्यों याद दिलाते हो तुम भाई? अभी बॉल लगी तो बॉल लगी। पर सच्ची में आप लोग टैक्सी में गए थे वहां पे? मैं और मान साहब गए थे टैक्सी में। दोनों हाँ, सच्ची दोनों में गए थे, टैक्सी में हाँ। गए थे? अरे मुझे ऐसा मुंह पकड़ा, 6 टाका डाला है सर। एनीवे, एक्चुअली मैं भी एक स्टोरी बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं जब आई वाज नॉट प्लेइंग द फाइनल्स, so I was just signing the bats. And Ballu got Ganesh bowled. So I didn't watch it. तो मेरे एक दोस्त काठियावाड़ी थे, तो એને પૂછ્યું બાપુ શું થઈ ગયો? બાપુને કીધું બેટ એની પેનમાં વચ્ચે ગે પતિ આમાંથી દડો ઘૂસી ગયો. Anyway, but it was fantastic. I think we had a great time. And Man was with me in the taxi, of course. And then we were going to the hospital. I think because there was no doctor, there was nobody on the ground. But Man took me and took care of myself, I think, throughout the tour. Thank you, Man Bhai. Well done. Thank you. I'll ask Wally Bhai at the end a question. Your most special memory from this entire duration that all of you were in England? Well, when we joined the team, I was playing in England, so was Kirti, and the team also, some of the members came straight from West Indies, some from India. So it was, we all got together, and the way the preparation started, most of you must be used to the kind of squad and the support system that you see now. Those days, it was just 14 players and one manager. There was no coach, no physiotherapist, no analyst, no assistant coach, nothing. So the entire thing was being done by the team. The players, each one took on the drill every morning. And that's how it all started. So you can understand, and Dilip Bhai, as he mentioned about that injury, I was the one who took off his pads when he was brought in. And it was a nasty one. And there were 3 people who were there. 11 are playing, 1 went in, 2 players are left. Manbhai had to go. Otherwise, one of the players would have escorted them. So that itself reflects the kind of bond and the way we got together. And yes, the icing on the cake started right with our very first game. That was what really set the tone. And Gaurav, you can't even imagine, because West Indies, the first 2 World Cups, they were unbeaten. And everyone expected them to win this year as well. Very strong, balanced side. And more importantly, we were totally written off. Our record, 1 victory against East Africa in 2 World Cups. So not much expectation there. But then when you see that set the tone. And yes, Yash played that remarkable innings. And that set the tone, and that's how our journey started.
and it got better. We had those, Zimbabwe, yes, definitely the best ever innings we've ever seen from a batsman. Kapil, it was absolutely, a mind-boggling innings. Nobody gave us any chances. And after that, there was no looking back, nothing to, we did well. Our initial goal was to qualify, and which we did. And then there was no pressure really, we just had to go and perform. So that was, it was such a wonderful journey, and would like to thank Gautam Bhai to just giving us this opportunity to be here on this Adani Day. And it surely reflects the core competency and is also a testimony of your resilience and your tenacity. All the best with your growth story. Good luck, sir. Dilip bhai, if you could just pass the mic to Man bhai, and I'd like Man bhai to say a few words also of what this day means to you and what the tournament win meant for you. You see, जब हम तो जीत के वापस आए, जिसको भी मिलो, ग्रुप हो या महफिल हो या अकेले कोई हो, तो ये बोलते हैं कि ये जो 15 लोग आप, जो 14 लोग जो आपके नीचे थे, आप उनके साथ दिन में 24 घंटे थे, इनका मसाला क्या था? ये मसाले के कुछ इंसिडेंट्स बताओ। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। मसाला का इंसिडेंट तो रहा अलग। इस टीम की खासियत मैं ये बताना चाहूँगा कि गोविंदराज एक हैदराबादी प्लेयर था। 1971 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ गया और 83 में वो SBI ब्रांच लंदन में काम कर रहा था। तो हमारा टूर शुरू होने से पहले उसने कहा, मान ज़रा देखो इफ़ दे कैन प्ले अ बेनिफिट मैच फॉर मी। तो 26 of June what happens to be a Sunday, तो उसने कहा 26 जून को ये मैच खेलेंगे। मैंने टीम मीटिंग में रखी, एवरीबडी एग्रीड। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसी ने ये नहीं सोचा कि वी विल बी वर्ल्ड चैंपियंस। वर्ल्ड चैंपियन बन गए। रात तमाम सुबह सुबह तक तमाशा हो रहा है। 25 तारीख का 26 तारीख शुरू हो गई। जब मैंने टाइम दिया था कि भाई 11:30-12 बजे टीम बस में होनी चाहिए, ये टीम की क्रेडिट है कि एक और क्रिकेटर के लिए सारे के सारे बस में बैठे थे। हाँ, एक चीज बता दूंगा मैं कि जो थे 14 उस मोमेंट में या वो हिसाब में खेलने लायक तो नहीं थे, वो अपने होश में भी नहीं थे, लेकिन हमने जीता। और जो हमें आज इज्जत दी है आप लोगों ने, उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। Thank you, Man bhai. And आपने इतनी अच्छी बात बोली ओली भाई, because today you see teams, you see IPL teams, you see support staff outnumbers the players, right? There's so many people, and he alone was handling so many of those things. And Dilip bhai, that's why I asked about the taxi, because I thought कि शायद taxi के भी पैसे ना थे दिए थे उस टाइम BCCI ने. So maybe like you guys had to go in a bus or something. That's why I was checking. कि वो फिल्म में ठीक दिखाई देगी In fact, he was one amongst us only. I mean, not as a manager, but we did the good things and the bad things together on and off the field. Lovely, lovely. And now, since you have seen, we have asked everybody a question. Now the show begins. चल रे चल, सब लोग चल। कैप्टन आप मेरे साथ है, चल। Hey, come, partner, come now. Come on. I think this is called team spirit. That's the best thing. We must clap for Shrikant. No problem. See, आप हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। हाँ, हाँ। One thing, I think let Sunil talk for a minute before I come. Gaurav, start. Sir, you don't need me to start, sir. Shut up then. गौतम भाई, आपका इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए? हिंदी, इंग्लिश।
नहीं मेरा हिंदी बहुत अच्छा है भाई, 40 साल हो गया अभी। मैं साला मद्रासी हूँ, उस टाइम में कुछ भी मालूम है मेरे को, तमिल हिंदी कुछ नहीं मालूम है। 40 साल इन लोगों के साथ खेल के मेरा हिंदी बच गया, बड़ा हो गया अभी। दो बात करना चाहिए। गौतम भाई, मेनी हैप्पीनेस द डे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बहुत शुक्रिया आप लोग हम लोग का इनवाइट करने के लिए। ओ सुनील वाटसन एक बोला ना, और क्या बोला, विच टीम India beat before 70 in 79 World Cup, which is the team which beat East Africa? कोई कंट्री नहीं, आप लोग मालूम है ना, ईस्ट अफ्रीका कुछ नहीं, कंट्री नहीं। टांजानिया, युगांडा, केन्या, सब लोग ईस्ट अफ्रीका, सब लोग आपके साथ गुजू बाबा है, पटेल भाई है, गौतम भाई है, सब भाई बाल गए, चलो रे टीम लगा दो, एक टीम लगा, ऐसा बोला। ऐसा टीम को बीट करके हम लोग एक टीम जीता गया, ऐसा बोल रहे हैं एक वर्ल्ड कप में। गौतम भाई के बैट किलो, तू कह रहा है गौतम भाई, तू चल गया, चल। क्या नाम है आपका, क्या भाई आप? हाँ सुब्रत भाई, चल आप भी टीम में है। आप क्या भाई? सुरेश भाई आप विकेट कीपर है, चल आप क्यों नहीं भाई? हाँ सुचिप्ता भाई आप ओपनिंग बैट्समैन। ऐसा चल के ऐसा टीम बना के ईस्ट अफ्रीका नाम दे दिया, उस टीम में बीट करके वो बोल रहा है हम लोग एक ही वर्ल्ड कप मैच जीता। कौन है? ईस्ट अफ्रीका। ऐसा कंट्री भी नहीं है। इधर से टर्निंग पॉइंट हुआ, इधर ना पहला मैच रॉजर भी नहीं कुछ बोला ना, थोड़ा अलग बोला। ये प्रेसिडेंट है ना अभी, ही इज बिकम वेरी व्हाट यू कॉल पॉलिश्ड नाउ, फ्रैंकली ही इज बिकम वेरी कॉन्शियस। फ्रैंकली स्पीकिंग, कपिल देव स्टार्टेड द टीम मीटिंग। उस टाइम टीम मीटिंग 10 मिनट था, कुछ नहीं, हमारे पास टीम मीटिंग कुछ नहीं। कपिल बेल वाला हम लोग वेस्ट इंडीज पे एक बार भी जीत गया ना, दूसरा बार क्यों नहीं जीतेगा? उस टाइम रॉजर बिनी वाज अ सिगरेट स्मोकर, आई एम स्टिल अ सिगरेट स्मोकर, कीट केजर स्टिल अ सिगरेट स्मोकर, किरमानी भी सिगरेट स्मोकर। हम लोग सोच रहे ये पागल कैप्टन कुछ भी बोलता है रे। वेस्ट इंडीज के जीत के बोल रहा है, पहला मीटिंग में हुआ मालूम है मैं रॉजर, इज इट ट्रू और नॉट? आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू। चलो, this is, I've said this a million times, but this is important because it all relate to what people said. I'm speaking from what they all said. So from what Wally said and Roger said, it was real pagal thinking. Kya West Indies? Mr. Gavaskar arranged a beautiful tour for us to West Indies from Bombay to New York, stopover in London to play cricket. Amara, what do you call? Honeymoon in London. Honeymoon and thing. 6 of us had booked, 8 of us had booked to go to America to go for a holiday. And watch the World Cup, by the way, semi-final, final. जाके खेलो। हमारा कैप्टन पागल, आजा भाई इधर, 1 मिनट आजा। ये पागल शो सब कुछ का चेंज बदल गया। और क्या? What do you say for change in Hindi? बदला हो गया इसका कैप्टन का। सर क्या कैप्टन था? अदानी भाई, आप मुंद्रा पोर्ट शुरू करने के टाइम में क्या बोला सब लोग का? क्या बोला? क्या है गौतम अदानी हो, आप पागल हो गया रहे, वो कुछ जाके कुछ मुंद्रा पोर्ट कुछ शुरू करे क्या? ऐसा बोला नहीं क्या? सच्ची बोलो बाबा। Tell me the truth. Hey, Karan, where are you, Karan? Karan, where are you? Karan. Hi, come here, Karan, with me. Come with me. You have to come here with me. Karan is incidentally Adani's second son, by the way. Karan, when you started the ports, what did the people think about your dad? Tell me the truth. As I thought about my captain, right? 100%. Tell me the truth. They thought he was crazy. That is the spirit of, I saw your poster coming out. The game changer is what Mr. Kapil Dev and this entire team is. And that is a game changer in Adani Group, thanks to Gautam Adani. That's the linking I'm trying to bring in. That both the teams had a crazy pagal captain. आपका कैप्टन तो गौतम अदानी है, हमारा कैप्टन तो कपिल देव है. So when you have a guy with crazy thinking, innovation and resilience, and when a guy can score from 17 for 5, 18 for 6 and 175 not out, what do you call him? Do you call him a batsman or a crazy player or an outstanding cricketer? What do you call him, sir? Crazy player. Brilliant. हाथ दे दो सर.
क्या नाम है जी? जयंत. Jayant, barabar bada. Crazy player. When you're crazy, your intelligence is something outstanding. Always understand that. When you're crazy, you are something outstanding. You're out of the box. Mr. Kapildev Nikanj, you are simply fantastic. And Gautam Bhai, you are also the same crazy captain. That's why today, Gautam Bhai, what Adani is thanks to your craziness and your crazy thinking out of the big things. Congratulations, Gautam Bhai. Happy birthday. Well done, my dear guys. Thank you, guys. Bye. Thanks a lot. अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि एक मैनेजर थे, पूरे टीम के लिए एक मैनेजर, इसके लिए दूसरा चाहिए था. इतना बात कर रहे ना ये, किधर से एंटरटेनमेंट आएगा? बोलो ना उधर. इंग्लैंड में किधर से एंटरटेनमेंट? सब लोग मेरे के पीछे आ रहे हैं. आज भी मेरे पीछे आ रहे हैं. आज भी मैंने गो टू स्मोकिंग gun. Vidya, your husband is gone for smoking. Who? Kirti Azad. Vidya shouting at me, my wife. Oh, Chika, what are you doing? Smoking there. इधर भी चाबी, इधर भी चाबी, पीछे भी चाबी, आज भी चाबी है मेरे को. हार्ट निकाल लिया, इसका हार्ट. Can we have a big round of applause for Mr. Srikanth, please? And I always say that actions speak louder than words. I think that just what you have seen in the last 5-7 minutes, in terms of the camaraderie, in terms of, don't focus on what's said, but just if you focus on their body language, how much they cheer each other, how much they pull each other's leg, I think that's what tells you about this team, this brotherhood, this family, and that's what tells you why this team did all it did, and they continue to be so close even today. So let's give them a big round of applause, please. Ladies and gentlemen, our champions. Hi. First of all, Kirti want to say something? You want to say something? Okay, after the... Yes. Kirti will say that. Gautam Bhai, can we invite you here on the stage, please? Agar aap aaye. सिर्फ इतना कहूंगा कि गौतम भाई को people getting together. I'm announcing. I'm the now compare now. When two crazy people get together, what happens? Magic. That's going to happen. No, two crazy together with the teams is magic. गौतम भाई, ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप इस दुनिया में ना खरीद सकें, आपके पास ना हो. हम कलेक्टिवली सोचे हैं कि हम आपको क्या दे सकते हैं आपके जन्मदिन पर. तो हमने यही सोचा कि हम पूरी टीम ने इस बल्ले को साइन किया है. कहना या आसमान भाई, मान भाई इधर आइए. मान भाई, like a father figure, this is the bat we want to give. This is a 61st birthday. Behalf of the Indian team 83, we want to present you. I hope you can keep it in your collection. Happy birthday. And second, we are with you. The entire team is with you. वो आपने मुहिम चलाई है कि 2023 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान जीते. हम आपके साथ हैं. हम दुआ करते हैं. हम पूरा हिंदुस्तान दुआ करता है अपनी टीम के लिए, इस आने वाले वर्ल्ड कप के लिए वो जीते. आपने इतनी बड़ी मुहिम की है तो हम आपके साथ खड़े हैं. और मुझे लगता है कि सारे लोग भी ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान जीते. मैं ये कहूँगा, जीते या ना जीते, उनकी मेहनत में और उनकी लगन में कमी नहीं होनी चाहिए. जो टीम बेहतर खेले वो जीते. मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जीते. पूरी टीम ये चाहती है कि हिंदुस्तान की टीम जीते अगला वर्ल्ड कप, बट उनकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए. ये हमारी पर्सनल फीलिंग्स हैं.
Congratulations, sir, and a very happy birthday to you. I hope you like this present. It's a very special memento that the team has got for you. I'd like to invite Amanji on stage, please. He, of course, is the brand custodian, and he will tell us a little more about this campaign. So you could welcome him on stage with a warm round of applause, please. 61 is your birthday. You are getting that. And very, only very few people are going to get this. Thank you very much. अपने संक्षिप्त उद्बोधन के पहले मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक बार अपनी सीट पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ हमारे संस्थापक और अध्यक्ष के जन्मदिन के लिए उनका अभिवादन करें। श्रीकांत जी के एंटरटेनिंग उद्बोधन के बाद बहुत कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं और आप सब लोग ने आज सुबह से हमारे चेयरमैन को जब बधाइयां दी होंगी तो उनकी दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनकी समृद्धि के लिए बोला होगा। लेकिन एक चीज जो हमारे चेयरमैन की कुंडली और हमारे ग्रुप की कुंडली में नहीं है वो शांति है। ये वर्ष भी हमारे लिए चुनौतियों का होगा। संघर्ष और चुनौतियों का दूसरा नाम गौतम अडानी है। इस सारे संघर्ष और चुनौतियों के बीच भी हम सफलता से उभरेंगे। और चूंकि आज क्रिकेट का माहौल है तो जो मेरा एक अल्प अनुभव है गौतम भाई के साथ काम करने का और इस ग्रुप के साथ काम करने का, तो अगर हम गौतम भाई के नेतृत्व को और इस ग्रुप के व्यक्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास करें और जो कुछ भी मैंने गौतम भाई के साथ काम करने में देखा है उसको क्रिकेट की भाषा में बोलें, तो 3 बहुमूल्य लेसन दिखाई देते हैं जो मैंने महसूस किए। और अगर मैं उसको क्रिकेट की भाषा में वर्णित करूं तो खासतौर से सनी भाई की भाषा में, जैसे अक्सर वो कमेंट्री में कहते हैं कि वी हैव टू रिस्पेक्ट द कंडीशंस। मैंने सनी भाई के वीडियो देखे हैं, सचिन के, विवियन रिचर्ड्स के, ऐसे बहुत से मौके आए हैं जब पहले 1 घंटे आपको बॉलर को देने पड़ते हैं, आपको कंडीशंस को देने पड़ते हैं। जैसे अभी कह रहे थे बॉल स्विंग हो रही है, पिच लाइवली है, वैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देयर आर मेनी टाइम्स। आज एज अ अडानी ग्रुप हर बिजनेस में लीड कर रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सब लोगों को बताया था कि हमारे 10 वर्टिकल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम भले किसी भी बिजनेस में लीड कर रहे हों, ऐसा समय आता है जब आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, अपने कॉम्पिटिटर्स को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। हो सकता है इस छोटे मोटे बैटल्स भी हमको गंवाने पड़े, बट अगर हमारी लार्जर वॉर जीतने की इच्छा है और क्षमता है तो हमको उन कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा जो एक बहुमूल्य लेसन है वो ये है कि डोंट प्ले द बॉलर, प्ले द बॉल। अक्सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और बाहरी दुनिया में हम इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सुझाव किसका है, कौन ये बात बोल रहा है, बजाय इस पे ध्यान देने के कि सुझाव क्या है, विचार क्या है। डोंट प्ले द बॉल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सनी भाई को शायद याद होगा। उन्होंने सिर्फ 1 विकेट लिया है 1978-79 में फैसलाबाद टेस्ट के 2nd इनिंग में,
जहीर अब्बास 96 पे खेल रहे थे और बिशन सिंह बेदी ने उनको बॉल दी थी, और सुनील गावस्कर महान बल्लेबाज हैं, लेकिन बॉलर के रूप में उनकी कोई ख्याति नहीं है। और जहीर अब्बास सनी गावस्कर बॉलर को खेल रहा था, ना कि उनकी बॉल को, और 96 रन पे वो अपना विकेट गवा बैठे। ये वो समय है जब जहीर अब्बास और जावेद मिर्जाद को आउट करना असंभव था। हम स्कूल में पढ़ते थे, कमेंट्री सुनते थे, वो लगातार बैटिंग करते थे, वो आउट ही नहीं होते थे। तो ये दूसरा बहुत बहुमूल्य लेसन है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, इट टेक्स ओनली वन बॉल टू गेट यू आउट। You may be playing at 300, 100, whatever your score. As a company, we need to understand that we need to always be on our toes. Whether it is compliance, whether it is following statutory rules, regulations, declarations, whatever it is, we need to be always compliant. मैं जब अपना पिछली इनिंग में जब मैं काम करता था, तो मैं अपने आईजी सिक्योरिटी को हमेशा यही बोलता था कि टेररिस्ट या नक्सलाइट्स को सिर्फ एक बार सही होना है, whereas आपको 100 times सही होना है. As a company, we also need to understand that we always need to be vigilant. आज के हमारे कार्यक्रम के 2 पार्ट थे. पहला पार्ट कंप्लीट हो गया. दूसरा पार्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है कि जब हम इस कार्यक्रम की रूपरेखा चेयरमैन से डिस्कस कर रहे थे, तो ये उनका ही ख्याल था कि पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी के टूर्नामेंट को नहीं जीत पा रही है, नजदीक पहुंचने के बाद भी. और चाहे खेल हो या बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट है लक. जिस टीम के साथ 120-130 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं हों, कोई कारण नहीं है कि वह टीम लकी साबित ना हो और विश्व कप ना जीते. ये इत्तेफाक की बात है कि आज 40वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या है. हमने पहला वर्ल्ड कप जीता था और इसी वर्ष वर्ल्ड कप का भी आयोजन हो रहा है. इसीलिए ये तय किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देने के लिए हम एक मुहिम चलाएंगे और उस मुहिम के अंतर्गत 2 चीजें हम कर रहे हैं. एक, क्रिकेट बैट जो है, हमारे चेयरमैन का ये मानना था कि गुड लक देने के लिए 1983 की विनर टीम से बेहतर और कोई शुरुआत नहीं हो सकती. एक बार मशहूर कमेंटेटर रिची बेनो ने कहा था कि कैप्टेंसी इज 90% लक एंड 10% स्किल. साथ में ही एडेड अ कैविएट, बट डोंट ट्राई विदाउट दैट 10% स्किल. सो भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देने के लिए 83 वर्ल्ड कप की टीम और श्री गौतम अडानी, इनके द्वारा साइन किया हुआ एक बैट है जो भारतीय क्रिकेट टीम और उनके कप्तान को सौंपा जाएगा. बैट की साइनिंग आज होगी. अभी भारतीय क्रिकेट टीम घोषित नहीं की गई है. शायद बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हमारे बीच हैं, वो बता रहे थे कि शायद मिड सितंबर में घोषणा किया जाएगा. इसके साथ ही हम एक अपनी सिग्नेचर कैंपेन भी लॉन्च कर रहे हैं जो भारतीय टीम को विश करने के लिए, और उसके लिए हमने सोशल मीडिया पे विश वॉल भी क्रिएट की है और एक यहाँ पे फिजिकल वॉल भी क्रिएट की है जिसमें हम भारतीय क्रिकेट टीम के 83 विनर्स के और गौतम भाई के सिग्नेचर लेंगे. और कैंपेन जो है वो उसकी जो टैगलाइन है, मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा यूज करने के लिए, वो है जीतेंगे हम. उसके लिए हमने एक सिग्नेचर ट्यून भी बनाई है जो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे. उसके पहले मैं अनुरोध करूंगा कि वो जो क्रिकेट बैट है उस पे भारतीय क्रिकेट टीम के हमारे कप्तान और बाकी लोग साइन कर चुके हैं. मैं गौतम भाई से अनुरोध करूंगा कि उसमें वो भी साइन करें जिससे कि उस बैट को और अब मैं
कप्तान साहब कपिल बाजी से अनुरोध करूंगा कि वो सामने की जो फिजिकल वॉल है उस पर वो साइन कर दें, और बाकी खिलाड़ियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो साइन, जी हाँ, उस पर। और आखिरी में मैं गौतम भाई आखिरी में साइन। आंधी आए या तूफान फतेह करेंगे हर मैदान, जीतेंगे हम। जज्बा ये इस दिल में है, नजर सदा मंजिल पे है, जीतेंगे हम। सुनहरे इतिहास को फिर से हम दोहराएंगे, जीत के दिखाया है, जीत के दिखाएंगे। जी जान से खेलेंगे हम हर बाजी, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। आप प्लीज अपनी अपनी जगह ले लें, बस मुझे 1 मिनट जो हर एक बार की हम कार्रवाई एक आपस में करते हैं उसको लेकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारे साथी और बहुत महत्वपूर्ण साथी थे। हमारा तो एक परिवार ही है, वो हमारे बीच नहीं रहे। सबसे अगर कहा जाए फिटेस्ट आदमी हमारे टीम में थे तो वो थे, और यशपाल शर्मा जी स्वर्गवासी हो गए हैं। वह उनका शरीर तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमको सदैव यह एहसास होता है कि उनकी आत्मा हमारे साथ ही रहती है। तो उनके याद में मैं चाहूँगा कि कृपया अगर 1 मिनट का हम मौन कर सकें तो बहुत कृपा होगी। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
Thank you. Now we can go down. या आई थिंक इसके साथ ही हमारा जो पहला पार्ट है वो खत्म होता है। मैं आप सब लोगों के अडानी परिवार के बिहाफ पे 1983 की विनर क्रिकेट टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। इसके बाद मैं हमारे अध्यक्ष जी को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। Thank you once again, sir.